নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগ 2ৰ যেটো 6 নম্বৰ লেসন আছে হেতু অসমীয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। যদি হে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। লেসনটোৰ নাম হৈছে চিঠিयों की अनूठी दुनिया। तो बॉक्सर भीतर जिखिनि আছে प्रथमे আমি এইখিনি চাই লওঁ। विचारों और भावों के आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। विचारों भावों आदान प्रदान কৰাটো মানুহৰ মনত যি চলি থাকে হেয়া ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰাটো কি হয় মানুহৰ কাৰণে এটা অপৰিহাৰ্য সামাজিক কাৰ্য হয়। पहले यह कार्य मौखिक रूप से संपन्न होता था। आगते एक काम तो मौखिक भावे संपन्न होइसिल। कालांतर में लिपि के विकास होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा। और समय जोৱাৰ लगे लगे जेतिया लिपि विकसित हल तेतियार পৰা কি হল इतो लिखित रूपत एक काम तो चलिবলৈ ধৰিলে। पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है। और ইয়াৰে এটা ভাগ হৈছে কি पत्र लेखन चिठी लिखा। प्राचीन काल से ही संदेश के आदान प्रदान के लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय और पारिवारिक क्षेत्रों में होता रहा है। प्राचीन काলৰ পৰাই বিভিন্ন বাতৰি आदान प्रदान কৰাৰ বাবে पत्र राजकीयভাৱে বা पारिवारिक क्षेत्रत व्यवहार কৰা হৈছে। संदेश वाहक के रूप में पत्र का पत्रवाहक के रूप में कबूतर, हरकारा, डाकिया आदि का महत्व बढ़ने लगा। तार पिছত কি হৈছে মানে এই কোনে অনানিয়া কৰিব হেতু চাবৰ কাৰণে ডাকিয়া আমাৰ যে আমি ডাকৱাল কওঁ পাৰ চৰাই এইবিলাক মানে কি হয় এইবিলাকে পত্ৰবাহক মানে পত্ৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ কাম এইবিলাকে কৰে। धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व भी बढ़ा। लाहे लाहे এই পত্ৰসমূহৰ ঐতিহাসিক আৰু সাহিত্যিক महत्व বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ तथा सूचना औद्योगिकी के कारण पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आई। किंतु युग परिवर्तনৰ लगे लगे আৰু उद्योग खণ্ডৰ বিকাশ হোৱাৰ লগে লগে পত্ৰৰ আদান প্ৰদানত কিছুমান কমি কিছুমান মানে সেই আদান প্ৰদানটো কম হ'বলৈ ধৰিলে। পত্ৰৰ ব্যৱহাৰটো কম হ'বলৈ ধৰিলে। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि এইবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ল পত্ৰৰ ব্যৱহাৰ লাহে লাহে কম হ'বলৈ ধৰিলে। परंतु यह विचारणीय है कि जो अनुभूति और भाव पत्रों से जुड़े होते हैं वे आधुनिक संसार माध्यमों में भी उसी प्रकार प्राप्त होते हैं या नहीं। किंतु आमी भाबिबलगीया कथा एटुৱে जे जितु अनुभूति आमी पत्ৰৰ পৰা পাওঁ সেই অনুভূতিটো আমাৰ যিবিলাক আধুনিক মানে আদান প্ৰদান কৰা মাধ্যম আছে संसार माध्यम বুলি কৈছে সংযোগৰ মাধ্যম আছে সেইবিলাকত সেই একে অনুভূতি আমাৰ আছে নে নাই একে আবেগ আমাৰ আছে নে নাই। गौर से देखने पर यह अनुभव होता है कि पत्र में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नए संसार साधनों में परिलक्षित नहीं होते। যদি আমি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাওঁ যে পত্ৰত কিছুমান এনেকুৱা গুণ আছে যিবিলাক এই নতুন যিবিলাক মানে যোগাযোগৰ মাধ্যম আছে এইবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। इसलिए पत्रों का महत्व अभी बरकरार है। সেইকাৰণে চিঠিৰ এতিয়াও মানে চিঠিৰ হে গুৰুত্বটো এতিয়াও আছে। प्रस्तुत लेख में लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह ने इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है। এই যেটো লিখনি আছে প্ৰবন্ধ আছে এই প্ৰবন্ধটোৰ লিখক হৈছে কোন অৰবিন্দ কুমাৰ সিং। মনত ৰাখিবা এটা আহে পৰীক্ষাত মানে প্ৰবন্ধবিলাক বা প্ৰবন্ধবিলাকৰ লিখকবিলাক আৰু কবিতাবিলাকৰ কবিবিলাকৰ নাম আহে। তো তেওঁ কি কৰিব খুজিছে লিখকে সেই তথ্যটোৱে যে পত্ৰৰ মানে গুৰুত্বটো এতিয়াও কমা নাই হেতু বুজাবলৈ মানে লিখকে এই লিখনিটো মানে তেওঁ লিখি উলিয়াইছে। पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्ৰৰ যিখন পৃথিৱী হয় এখন মানে কিবা আচৰিত ধৰণৰ আৰু সদায় ইয়াৰ মানে উপযোগিতাটো এতিয়াও মানে সদায় মানে আগৰ পৰা ইয়াৰ উপযোগিতা চলি আহিছে। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्रই যি কাম কৰিব পাৰে চিঠিয়ে যি কাম কৰিব পাৰে হেয়া কাম মানে সংসাৰৰ যিবিলাক আধুনিক সাধন আছে সেইবিলাকে কৰিব নোৱাৰে। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहा दे सकता है। पत्रই আমাৰ মনত যিমানখিনি সন্তোষ দিয়ে সন্তুষ্টি পাওঁ পত্ৰ এখন পঢ়িলে সিমানখিনি সন্তুষ্টি এটা ফোন বা SMS মেছেজ এটাই দিব নোৱাৰে। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नए घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र की करे এটা নতুন মানে নতুন নয়া সিলসিলা নতুন এটা বস্তু আৰু নতুন
এটা আৰম্ভণি কৰে আৰু কি কৰে ৰাজনীতি সাহিত্য আৰু কলাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান বিবাদ হয় নতুন ঘটনা হয় তাৰো মূল গুৰিটোৱে হৈছে কি ভেটিটোৱে হৈছে কি পত্ৰ दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है दुनियार माने पृथ्वीर जिमान साहित्य আছে तार केंद्रते कोन আছে पत्र और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है আৰু मानव सभ्यतार विकासत এই पत्र এই চিঠিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग अलग हो पत्ৰৰ भाव সকলো ঠাইতে একেই কিন্তু তাৰ নামবিলাক বেলেগ বেলেগ पत्र को उर्दू में खत संस्कृत में पत्र कन्नड़ में कागज तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तामिल में कादिद कहा जाता है এনেকৈ পত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আছে গোটেইকেইটা নাম মনত ৰাখিবা উৰ্দুত কি কয় সংস্কৃতত কি কয় কন্নড়ত কি কয় তেলুগুত কি কয় আৰু তামিলত কি কয় গোটেইকেইটা নাম মনত ৰাখিবা এমসিকিউ এটা আহিব ইয়াৰে पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं पत्र की करे आमार स्मृतिबिलाक धुनियाকৈ सजतने राखे पत्र इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है यात माने एको सन्देह करिबलगिया নাই যে पत्र की करे आमार स्मृतिসমূह माने धुनियाকৈ सजतने राखि थय हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा সকলোৰে কি আছে पत्र লিখাৰ এটা पत्र লিখাটো কলা হয় সকলো মানুহৰে পত্ৰ লিখাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं গোটেই পৃথিৱীত সদায় करोड़ মানে কোটি কোটি পত্ৰ কি হয় এইটোৱে আনখনৰ লগত কি কৰে মানে এখনে আনখনক বিচাৰি কি কৰে বিভিন্ন ঠিকনাত মানে পত্ৰ এনেকৈ আদান প্ৰদান হৈ থাকে भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है भारतत सदाय 4.5 करोड़ माने 4.5 करोड़ किमान चिठी की करा है डाकत माने दिया है माने डाकघरत इमान चिठी माने पठुआ है बेलेगले जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं जिए माने एटु प्रमाण करे जे पत्र किमान माने केनेकुवा एटा माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका पत्र पालन करे এই কথাটোৰ পৰাই আমি বুজিবলৈ পাওঁ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरूৱে 1953 চনত ঠিকে কৈছিলে কি কৈছিলে তেওঁ हजारों सालों तक संसार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोरे रहे हैं কৈছে যে হাজাৰ সালৰ পৰা মানে পত্ৰ মানে আদান প্ৰদান কৰাৰ সাধনটো কোন হৰকাৰে মানে যিবিলাক ডাকিয়া বুলি কওঁ আমি ডাকুৱাল সেইবিলাক আছিলে বা তেজ যিবিলাক একদম বেগত যিবিলাক ঘোঁৰা দৌৰিব পাৰে সেইবিলাক আছিলে उसके बाद पहिए आए তাৰপিছত আহিল চকা पहिए মানে হৈছে চকা पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया तार पिছত रेलवे और तार जेतियार পৰা চিঠি দিব পৰা হ'ল এই तार रेलवे আহাৰ পৰা মানে বস্তুবিলাক বেছিকৈ হলনি হৈ গ'ল तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया तार पिছত মানে আমি যে ডাকঘৰত দিওঁ হেতু মানে ৰেলৱেতকৈ বেছি সোনকালে মানে বেছি সোনকালে চিঠি পঠিয়াব आरम्भ करिले अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रही है और एतिया जिबिलाक आमार माने नतुन साधन আছে যোগাযোগৰ নতুন মাধ্যম আছে হেবিলাক আহিছে पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया যোৱা শতাব্দীত যোৱা শতিকাত কি কৰিছে পত্ৰ লিখনে চিঠি লিখাটোৱে কি কৰিছে এটা কলাৰ ৰূপ লৈছে डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए डाक जेটো डाक व्यवस्था আছে হেতু ধৰণী অনা হৈছে যাতে কি হয় পত্ৰবিলাকক মানে सही दिशा মানে উচিত মানে শুদ্ধ মানে দিশ যাতে পায় হেতুৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মানে চেষ্টা কৰা হৈছে पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया মানে পত্ৰ সংস্কৃতিটো বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে স্কুলৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আছে তাত পত্ৰ লেখন বিষয়টো কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যেন তোমালোকৰ মানে এক্সামতো আজিকালি আহে পত্ৰ লিখা ইংলিছতে হোক এছে ৰাইটিং বা অসমীয়াত পত্ৰ লেখন অসমীয়া নহয় হিন্দীত পত্ৰ লেখন বা অসমীয়াটো আহে চিঠি লিখা এনেকুৱা যিবিলাক আছে সেইকাৰণে সেইবিলাক কি কৰা হৈছে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে
भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। भारतते নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশসমূহতে এইবিলাক মানে প্ৰয়াস এইবিলাক মানে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যাতে পত্ৰ যেটো কলা আছে সেইটো আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে বিশ্ব ডাক সংঘয়ো নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি মানে চেষ্টা চলাই আছে। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। 1972 চনৰ পৰা বিশ্ব ডাক সংঘই কি কৰিছে 16 বছৰ বয়সৰ যিবিলাক তলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকৰ মাজত পত্ৰ লিখা প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार माध्यमों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। এতিয়া মানে কি হৈছে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ আছে সেইবিলাকত কিহৰ কাৰণে চহৰ আছে সেইবিলাকত মানে কি হৈছে এই যেটো আমাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম আছে বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি মাধ্যম বা বেলেগ কিবা কিবি কাৰণত মানে কি হৈছে পত্ৰৰ যেটো হেতু মানে हेतु माने की होइसे एतिया अलपमान माने कमी पत्र माने प्रभावित होइसे पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है किन्तु बाकी जिबिलाक आमार अलप पिसपरा ठाई আছে हेबिलाकत एतियाও माने पत्र तो माने আগতে যেনেকুৱা গোটে বিশ্বতে চলিছিল তেনেকৈ মানে পত্ৰৰ ব্যৱহাৰটো এতিয়াও হৈ আছে। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। फैक्स, इमेल, टेलीफोन मोबाइल এইবিলাকে কি কৰিছে চিঠিৰ যেটো গতি আছিল তেজ গতি আছিল বেগ আছিল হেতু এতিয়া নোহোৱা কৰিছে কিন্তু व्यापारिक যেটো ডাক সংখ্যা আছে হেতু কি হৈ আছে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। जहाँ तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो या पत्र का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। যদি আপুনি ভালকে চাই তুমি যদি ভালকে চোৱা মানে তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে এনেকুৱা কোনো এজন মানুহ নাই যিবিলাকে মানে জীৱনত এখনো চিঠি লিখা নাই বা কাৰোবাৰ দ্বাৰা লিখোৱা নাই বা কাৰোবাৰ চিঠিৰ উত্তৰ মানে একদম মানে যেটো কয় এগাৰলি মানে ব্যগ্ৰভাৱে কাৰোবাৰ চিঠিৰ বাবে বাট চাই থকা নাই এনেকুৱা মানুহ আমি কতো বিচাৰি নাপাম। हमारे सैनिक के तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। আমাৰ সৈন্যসকলে যেনেকৈ মানে পত্ৰৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰে তাৰ মানে একো মিसाल নাই হেতুৰ মানে আমি একো মানে বেলেগ একো আমি एग्जांपल বা বেলেগ একো উদাহৰণ দিব নোৱাৰো। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। এটা সময় আছিল যেতিয়া মানুহে এমাহলৈ মানে চিঠিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে पर अब वह बात नहीं কিন্তু এতিয়া হেবিলাক নাই। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। এতিয়া যেটো আমাৰ পৰিবহন ব্যৱস্থা আছে এটোৰ উন্নতি হৈছে যাৰ ফলত এই মানে যেটো দূৰত্ব আছিল সেই দূৰত্বটো কমি গৈছে মানে ইমান দিন মানুহে চিঠিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া নহয়। पहले लोगों के लिए संचार का एक लौता साधन चिट्ठी ही थी पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। আগতে মানুহৰ কাৰণে মানে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ সাধন আছিল চিঠি কিন্তু এতিয়া বেলেগ বেলেগ মাধ্যমো বিকশিত হৈছে। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो या फिर बड़े बड़े लेखक पत्रकारों उद्यमी कवि प्रशासक सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप के अनुसंधान का विषय है। কৈছিল যে আজিকালি মানে এনেকুৱা মানুহ নাই যিবিলাকে মানে কি কৰা নাই আগৰ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ চিঠি মানে ধুনীয়াকৈ সযতনে থৈ দিয়া নাই বা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পত্ৰকাৰ আছে লিখক আছে কবি আছে সন্যাসী আছে বা খেতিয়ক আছে এওঁলোকৰ ৰচনাসমূহ কি হয় নিজে নিজে মানে কি হয় অনুসন্ধানৰ বিষয় হয়। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। আজি যদি আগৰ নিচিনাকৈ মানে আজিৰ নিচিনাকৈ যদি যোগাযোগৰ সাধন আগতে থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ জীয়েক ইন্দিৰা গান্ধীক ফোন কৰিলে হয়। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। তেতিয়া দেউতাকে মানে জীয়েকৰ নামত চিঠি নিলিখিলে হয় কি কৰিলে হয় মানে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে জীয়েকক ফোন কৰিলে হয়। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं যিখন চিঠিয়ে কি কৰে মানে মানে দেশৰ বহুতো মানুহক প্ৰেৰণা দিয়ে।
पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं চিঠিটো আপুনি তুমি কি কৰিব পাৰা ধুনীয়াকৈ সযতনে থব পাৰা কিন্তু যিবিলাক SMS থাকিব সেইবিলাক কি হৈ যাব থাকিব কেইদিনমান তাৰ পিছত কি হৈ যাব এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं তুমি কিমানটা SMS তুমি সযতনে ৰাখিব পাৰা নোৱাৰা নিশ্চয় নোৱাৰা মোবাইলটো চেঞ্জ কৰিলে নোহোৱা হৈ যাব হয়নে নাই तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है जिमान डांगर मानुह আছে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ মানে মূল্যৱান বস্তুটোই আছে তেওঁলোকে লিখা চিঠিবোৰ भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है भारतत এইটো শ্ৰেণীত राष्ट्रपिता महात्मा गांधी সকলোতকৈ আগত ৰখা হয় दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है এতিয়া কিছুমান ইমান মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান সংগ্ৰহালয় আছে য'ত মানে মহান মহান লোকসকলৰ এই চিঠিবিলাক কি কৰি থৈ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ সযতনে থৈ দিয়া আছে तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এখন দেশ বা সেই সময়খিনি বা সেই সমাজখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए মানে যেতিয়া আমি কি আছিলোঁ ভাৰতত যেতিয়া স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম চলি আছিল মানে স্বাধীন হোৱাৰ আগতে যিবিলাক মানে ইংৰাজৰ বিদেশী মানে অফিচাৰ আছিলে ব্ৰিটিছৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকলৈ যিবিলাক চিঠি লিখিছিল সেইবিলাক পিছলৈ গৈ এখন মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ হিচাপে প্ৰকাশিত হৈছিল इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए थे और এই চিঠিসমূহে মানে প্ৰমাণ কৰে যে সেই সংগ্ৰাম যিটো ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিল এটো কিমান মানে শক্তিশালী আছিল महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे महात्मा गांधीर ওচৰত মানে পৃথিৱীৰ পৰা বিভিন্ন চিঠি केवल महात्मा गांधी इंडिया এনেকৈ আহিছিল और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे আৰু তেওঁ যতেই আছিল তাতেই তালৈ চিঠিবিলাক কি হৈ যায় চিঠিবিলাক গুচি যায় आज़ादी के आंदोलन की कोई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था মানে আন্দোলনৰ সময়ত বাকি যিবিলাক এনেকুৱা মহান ব্যক্তি আছিল महात्मा गांधी নিচিনা তেওঁলোকৰ লগতো এনেকুৱাই হৈছিল गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था তাৰমানে আৰু কৈছিল যে এনেকৈ তেওঁৰ ওচৰত বিভিন্ন চিঠি আহিছিল আৰু মানে তেওঁ সেইবিলাকৰ কি কৰিছিল মানে যিমান পাৰে সিমানটা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे কোৱা হয় যে যেতিয়াই তেওঁ চিঠিখন পাইছিল লগে লগে তেওঁ কি কৰিছিল তাৰ উত্তৰ লিখি দিছিল अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे নিজ হাতেৰে তেওঁৰ চিঠিৰ উত্তৰ লিখিছিল बेसिभाग चिठिर उत्तर तो निज हाथेरे लिखिছিল जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाई हाथ से लिखने में जुट जाते थे যেতিয়া লিখি লিখি তেওঁৰ হো হাতখন মানে বিখাবলৈ ধৰিছিল তেতিয়া তেওঁ বাও হাতখনেৰে লিখিবলৈ লৈছিল महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव में मिल जाते हैं অকল महात्मा गांधीৰে নহয় আন্দোলনৰ যিবিলাক মহান নায়ক আছিল তেওঁলোকৰ চিঠিও আমি গাঁৱে ভূঞে মানে পাওঁ पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं যিবিলাকে পত্ৰ পঠিয়াই তেওঁলোকে এই চিঠিসমূহক प्रशस्ति पत्र माने प्रशंसा पत्रতকৈ कम বুলি নাভাবে और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है और বহুতো মানুহে কি কৰিছে এই পত্ৰসমূহ মানে ফ্ৰেমত লগাই লৈছে মানে চিঠিৰ যিবিলাক উত্তৰ আহে সেই উত্তৰবিলাক মানে উত্তৰত যিখন চিঠি আহে সেইখন কি কৰিছে ফ্ৰেম বনাই মানে চিঠিখন থৈ দিছে ইয়া है पत्र का जादू और ये होल पत्रों जादू यही नहीं पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है और ये নহয় पत्रों आधारते पत्रक माने मेन सेंटर हिसाबत লৈ मेन केंद्र हिसाबत লৈ पृथ्वीर विभिन्न भाषात बहुत किताब लिखा होइसे वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है वास्तवत पत्र कोनो दस्तावेजत के कम নহয় पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी এইবিলাক হৈছে পত্ৰৰ মানে পত্ৰৰ
ऊपर माने लिखा किताब। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। कोৱা যায় যে প্ৰেমচন্দ মুন্সী প্ৰেমচন্দে কি কৰিছিল, যিবিলাক মানে নতুনকৈ লিখক আহে তেওঁলোকক মানে বহুত প্ৰেৰণাদায়ক চিঠিৰ উত্তৰত তেওঁ বহুত প্ৰেৰণা মানে দিছিল, উৎসাহিত কৰিছিল। তথা পত্रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे আৰু মানে চিঠিৰ উত্তৰো তেওঁ দিছিলে। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। তাৰপিছত নেহেৰু বা গান্ধীয়ে লিখা পত্ৰ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে লিখা পত্ৰবোৰো বহুত প্ৰেৰণাদায়ক হয়, উৎসাহিত কৰে মানুহক এইবিলাকে। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। 1915 পৰা 1915 পৰা 1941 চনলৈ মহাত্মা গান্ধী আৰু কবি নামেৰে মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ নামত বহুতো পত্ৰৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে আৰু সেই পত্ৰবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মনৰ স্থিতিটো কেনেকুৱা আছিল সেইবিলাক জানিব পৰা যায়। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार जो परंपरा आछे तो भारत बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। किंतु यार विकास आसलके माने विकास तो स्वाधीनतार पिछते होइसे। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। जिमान आमार सरकारी विभाग आछे हेबिलाकर तुलनात आटाइतকৈ गुडविल कोड आछे, डाक विभागर आछे। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोग को जोड़ने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। इ की करे মানুহক মানে কেনেকৈ মানুহক মানে মানুহৰ মাজত সংযোগ মানে সাধন কৰিব পাৰি, হে ইয়াত হেতু মানে हेतु काम करे। সেইকাৰণে ইয়াৰ কি আছে, गुडविल আছে বা সুনাম আছে। इसकी एक घर घर तक इसकी पहुँच है। यार माने घर माने प्रति घर মানুহলৈ মানে ই যায়। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इमान उन्नत साधन थकार पिछतो एতিয়াও चिठी पत्ৰৰ মানে এতিয়াও চিঠি পত্ৰ কি আছে, জীয়াই আছে, মানে চিঠি পত্ৰৰ अस्तित्वটো এতিয়াও আছে। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, शहरत माने डांगर अट्टालिकात थका मानु बा एटा झुपुरी घरत थका मानु, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हो या फिर बर्फानी के बीच जी रहे पहाड़ी के लोग, दुर्गम ठाईत थका एखन माने दुर्गम ठाईत जंगलरे घेरी थका एखन गाँव बा माने बरफर माजत पहाड़त थका लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग। কৈছে যে সাগৰৰ পাৰত থকা সেই মাছমৰীয়াবিলাকে হওক বা মৰুভূমিত থকা মানুহবিলাকেই হওক, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। আজিও তেওঁলোকে কি কৰে, এতিয়াও বহুত উৎসুকতাৰে মানে উৎসাহেৰে তেওঁলোকে চিঠিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰে। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं। এজন দুজন নহয়, কোটি কোটি লোকে কি কৰে, চিঠি আৰু অন্য সেৱাসমূহৰ কাৰণে ভাৰতীয় ডাকঘৰত যায়। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। গতিকে আমি ডাকঘৰৰো মানে এটা प्रधान भूमिका देखिবলৈ पाऊँ। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मानी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। दूरत थका लाख लाख परियाলত মানে তেওঁলোকে খাদ্য খাবলৈ পায়, তেওঁলোকৰ ঘৰত চৌকা জ্বলে কিহৰ কাৰণে, এই মানি অৰ্ডাৰ মানে যে মানে মানি অৰ্ডাৰ কৰি যে পইচা পঠিয়াই দিয়ে, ডাকঘৰত যে পইচা পঠিয়াই তাৰ ফলত মানে দূৰত কোনোবা আছে, ধৰা গিৰিয়েকজন দূৰত আছে, ঘৈণীয়েকলৈ মানি অৰ্ডাৰ কৰি পইচা পঠিয়াইছে, বা পুতেকজন ক'ৰবাত দূৰত আছে, জীয়েকজনী ক'ৰবাত দূৰত আছে, মাকজনী ঘৰত বহুত দূৰত অকলে আছে, মাকলৈ মানে ডাকঘৰেৰে পইচা পঠিয়াই দিছে, সেইটোক মানি অৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, বাকী ফেমিলিটোৱে খাবলৈ পায়। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मानी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गाँवत এনেকৈ সৰু সৰু গাঁও বা বস্তিবিলাকত এনেকৈ যে মানি অৰ্ডাৰ লৈ যায়, যিবিলাক ডাকুৱালবিলাক পিয়নবিলাক, সেইবিলাকক কি বুলি ভবা হয়, মানে তেওঁলোকে কি জ্ঞান কৰে, দেৱদূত মানে ভগৱানে পঠিয়াই দিয়া এজন দূত বুলি তেওঁলোকে কি কৰে, মানে সেনেকুৱা জ্ঞান কৰে সেই ডাকপালজনক।
আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে এইটো লেছনৰ মানে যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আগতে ভিডিঅ' এটা দি থৈ দিয়া আছে প্লেলিষ্টত থোৱা আছে ক্লাছ 10 হিন্দী ইলেক্টিভ বুলি প্লেলিষ্টত ভিডিঅ'টো দিয়া আছে যদিহে তোমালোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু যদি বেলেগ কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা আৰু মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মোৰ পৰা যদি তোমালোকৰ কিবা হেল্প হয় তো নিশ্চয় মোৰেই ভাল লাগিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লাষ্টত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ